तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजना यमुनतीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्-भागवतम की जय। श्रील व्यासदेव की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी की जय। परीक्षित महाराज की जय। श्रील सूत गोस्वामी की जय। शौनकादि ऋषिगण की जय। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेद गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। Reading from Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 1, Chapter 15, chapter entitled The Pandavas Retire Timely. Text 31. Vishoko Brahma Sampatya Sanchinnadvaita Samshayaha Leena Prakriti Nairgunyat Alingatvat asambhavaha. Vishoko Brahma Sampatya Sanchinnadvaita Samshayaha Leena Prakriti Nairgunyat Alingatvat asambhavaha. Vishoko Brahma Sampatya Sanchinnadvaita Samshayaha Leena Prakriti Nairgunyat Alingatvat asambhavaha.
Mataji's. Vishokaha, free from bereavement. Brahma Sampatya, by possession of spiritual assets. Sanchinna, being completely cut off. Dvaita Samshayaha, from the doubts of relativity. Leena, merged in. Prakriti, material nature. Nairgunyat, due to being in transcendence. Halingatvat, because of being devoid of a material body. Asambhavaha, free from birth and death. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Translation: because of his possessing spiritual assets, the doubts of duality were completely cut off. Thus he was freed from the three modes of material nature and placed in transcendence. There was no longer any chance of his becoming entangled in birth and death, for he was freed from material form. Purport: dualities, doubts of duality begin from the misconception of the material body, which is accepted as the self by less intelligent persons. The most foolish part of our ignorance is our identifying this material body with the self. Everything in relation with the body is ignorantly accepted as our own. Doubts due to misconceptions of myself and mine, in other words, my body, my relatives, my property, my wife, my children, my wealth, my country, my community, and hundreds and thousands of similar illusory contemplations cause bewilderment for the conditioned soul. By assimilating the instructions of the Bhagavad Gita, one is sure to be released from such bewilderment, because real knowledge is knowledge that Supreme Personality of Godhead, Vyasadeva, Lord Krishna, is everything including oneself. Everything is a manifestation of his potency as part and parcel. The potency and the potent are non-different, so the conception of duality is at once mitigated by attainment of perfect knowledge. As soon as Arjuna took up the instructions of Bhagavad Gita, expert as he was, he could at once eradicate the material conception of Lord Krishna, his eternal friend. He could realize that the Lord was still present before him by his instruction, by his form, by his pastimes, by his qualities and everything else related to him. He could realize that Lord Krishna, his friend, was still present before him by his transcendental presence in different non-dual energies, and there was no question of attainment of the association of the Lord by another change of body under the influence of time and space. By attainment of absolute knowledge, one can be in the association with the Lord constantly, even in this present life, simply by hearing, chanting, thinking of and worshipping the Supreme Lord. One can see him, one can feel his presence even in this present life, simply by understanding the Advaya Jnana Lord, or the Absolute Lord, through the process of devotional service, which begins with hearing about him. Lord Chaitanya says that simply by chanting the holy name of the Lord, one can at once wash off the dust on the mirror of pure consciousness, and as soon as the dust is removed, one is at once freed from all material conditions. To become free from material conditions means to liberate the soul. As soon as one is therefore situated in absolute knowledge, his material conception of life is removed, or he emerges from the false conception of life. Thus, the function of the pure soul is revived in spiritual realization. This practical realization of the living being is made possible due to his becoming free from the reaction of the three modes of material nature, namely goodness, passion, and ignorance. By the grace of the Lord, a pure devotee is at once raised
to the place of absolute, and there is no chance of devotees becoming materially entangled again in conditional life. One is not able to feel the presence of the Lord in all circumstances until one is endowed with the required transcendental vision made possible by devotional service prescribed in the revealed scriptures. Arjuna had attained this stage long before on the battlefield of Kurukshetra, and when he was apparently felt the absence of the Lord, he at once took shelter of the instructions of the Bhagavad Gita, and thus again he was placed in his original position. This is the position of Vishoka, or the state of being freed from all grief and anxieties. Please repeat the translation. Because of his possessing spiritual assets, the doubts of duality were completely cut off. Thus he was freed from the three modes of material nature and placed in transcendence. There was no longer any chance of his becoming entangled in birth and death, for he was freed from material form. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Svapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namavom Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nitinamini Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarini Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarobhyascha Krupa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hindi is okay? You can speak in Hindi. So आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत पहला स्कंद अध्याय 15। मेरा हिंदी कुछ थोड़ा आता है, इसमें फिर भी मैं प्रयास करूँगा क्यों तो मैं सीखना चाहता हूँ। सो आज इस श्लोक में सुत गोस्वामी ने फलश्रुति, आप यही अध्याय में अर्जुन 27 श्लोक में ये बताया है। उन्होंने जब कृष्ण की सूचना न ये तो आदेश को उन्होंने याद किया, स्मरण किया, तुरंत उनके अंदर जो भी शोक था, विशोक, जो भी उनके अंदर शोक, कृष्ण से मैं विरह हूँ, कृष्ण नहीं है, जो उनके अंदर जो बाधा हुआ है, वो बाधा काली उन्होंने केवल कृष्ण की उपदेश को स्मरण करके, याद करके उनकी शोक पूरा निकल गई। सो हम समझना है, अभी इधर ये भौतिक संसार में कोई भी एक पुस्तक रचना किया है तो वो पुस्तक के लिए आप देख सकते हैं, वो पुस्तक जो रचना किया है वो बिल्कुल वो पुस्तक पढ़ता नहीं है। वो पुस्तक वो ही खुद लिखा है, वो ही
क्या किया, समाज में प्रवेश किया है, उन्होंने रिलीज़ किया। वो पुस्तक में क्या है उनको पूछने तो वो बिल्कुल उसको वो पुस्तक में वो पढ़ेंगे नहीं है। परंतु इधर देख सकता है अर्जुन कृष्ण जब उन्होंने भगवत धाम चले गए, अर्जुन क्या कर रहा है, फिर वापस वो भगवत गीता को फिर स्मरण कर रहा है, याद कर रहा है। इसकी अर्थ क्या है, अर्जुन खुद फिर बारंबार क्या कर रहा है, भगवत गीता को पाठ कर रहा है। प्रभुपाद जी भी हमारा फाउंडर आचार्य है, वो खुद उनकी पुस्तक पढ़ रहा था। प्रभुपाद, एक शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद आप ही ये पुस्तक लिखा है, आप पढ़ने का जरूरत क्या है? प्रभुपाद बोला, मैं नहीं लिखा है, स्वयं कृष्ण ने लिखा है। सो प्रभुपाद कब लिखता था ये पुस्तक? पूरा रात में 11 बजे, 1 बजे ऐसा उठ के, पूरा दुनिया नींद में है, खाली प्रभुपाद है। प्रभुपाद के साथ कौन है? कृष्ण। कृष्ण बोल रहा है, प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, ये टीका को लिखा है। सो इसलिए प्रभुपाद खुद पढ़ रहा था। प्रभुपाद क्या बोलता था, ये पुस्तक मैं नहीं लिखा हूँ, कृष्ण स्वयं लिखा है। कैसे हमारा गोविंद भाष्य, हमारा भगवत गीता यथारूप को हम पुस्तक पढ़ेंगे, पहला पेज में वो भाष्य जो है हमारी वेदांत सूत्र के लिए, हमारी संप्रदाय का भाष्य क्या है, तो वो गोविंद भाष्य। गोविंद भाष्य क्यों कहा है, तो स्वयं गोविंद जी ने लिखा है। हमारा जयपुर में राधा गोविंद है ना, वो खुद उन्होंने स्वयं क्या किया, वो गोविंद का मुंह से जो निकला है वो बलदेव विद्याभूषण उन्होंने रचना किया है। सो इसी प्रकार हम इधर हम ये समझना है, हम भगवत गीता एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, ऐसी हमारा प्रभुपाद जी का एक शिष्य है, उनका नाम है परम पूज्य प्रहलादानंद स्वामी महाराज। वो अभी संन्यास मिनिस्ट्री का मिनिस्टर है, मंत्री है। सो वो अभी तक भगवत गीता 175 टाइम्स पढ़ा है, 1 बार 2 बार नहीं, बारंबार पढ़ रहा है। सो क्यों है, तो इधर हम देख सकते हैं अर्जुन का परिस्थिति इतना शोक में था, कृष्ण ने ये में क्या करना है, फिर पढ़ो। फिर उन्होंने खुद जो अर्जुन क्या सुना है ये सब कुछ याद कर रहा है। सो इसलिए ये श्लोक में सुत गोस्वामी ये फलश्रुति दे रहा है। फलश्रुति क्या है, तो जब ये 3 श्लोक फलश्रुति है, आप कृष्ण पाद को, कृष्ण चरण कमल को स्मरण करने तो आपका क्या मिल जाएगा। पहला श्लोक में 28 श्लोक में बताया है, जो कृष्ण की सूचना और कृष्ण के चरण कमल को स्मरण करेगा, उनकी मन के अंदर जो भी कल्मश है वो सब कुछ निकल जाएगा। और 29 श्लोक में ये बताया है, 29 श्लोक में ये बताया है, कृष्ण चरण कमल को, चरण कमल और कृष्ण की, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णास इंस्ट्रक्शंस एंड कृष्णास लोटस फीट। कृष्णास इंस्ट्रक्शन स्मरण करेंगे और कृष्णास चरण कमल को हम स्मरण करेंगे, दोनों एक ही है। सो ये 29 श्लोका में ये बताया है, कृष्ण की चरण को हम स्मरण करेंगे, हमको क्या मिलेगा, हमारी मन के अंदर, हमारी सोच में जो भी ट्रैश है, तो जो चीज़ हमारा मन में, हमारा जीवन के लिए जो नहीं चाहिए वो निकल जाएगा। वो 29 श्लोका में बता गया। कृष्ण की चरण कमल हम स्मरण करने के मात्र से क्या होता है, इधर बता गया है, उनकी भक्ति विथ ग्रेट वेलोसिटी भक्ति विल इंक्रीज। हियर प्रभुपाद यूजेस द वर्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी है तो विथ ग्रेट स्पीड। हमारी अंदर ये आशा है हम भक्ति में बढ़ना। सो भक्ति में बढ़ना है तो कृष्ण की चरण को हम क्या करना है, सवै मन कृष्ण पदारविंदयोः वाचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने। कृष्ण की चरण को हम स्मरण करना है। सो और तीसरा 30 श्लोक में सुत गोस्वामी ने ये बता रहा है, सो अर्जुन उन्होंने कभी भी उनकी मैं अभी भगवान से नहीं हूँ, मैं क्या करूँ, ऐसी सेंटिमेंटल अटैचमेंट नहीं था। उन्होंने तुरंत क्या किया,
प्रैक्टिकली अभी क्या करना है, फिर ओके ठीक है, भगवान जो मेरे को आदेश दिया है उनको स्मरण किया है, उनकी तुरंत क्या हो गया, उनकी जो भी उनके अंदर दुख और बाधा था सब कुछ निकल गए। यही ये श्लोक का सारांश है। सो हमारी आध्यात्मिक संपत्ति क्या है, तो भगवान को हम कितना स्मरण करेंगे वही हमारा संपत्ति है। इधर बता गया है ये श्लोक में, बिकॉज ऑफ हिज पोसेसिंग स्पिरिचुअल असेट्स। सो अभी भौतिक संसार पूरा क्या चल रहा है, तो सब लोग संपत्ति कैसे कमाना है, सब लोग सुबह से रात तक सब लोग पूरा व्यस्त है। परंतु इधर बता गया है हमारी स्पिरिचुअल असेट्स है तो आध्यात्मिक संपत्ति है। ये भौतिक संपत्ति क्या है, भौतिक संपत्ति वो कोई ना कोई परिस्थिति में वो नाश होना ही है, च्युत है। परंतु आप भक्ति के बारे में और भगवान के बारे में आप जो भी संपत्ति, आप आज अभी आया है, मंदिर में भगवान को कथा सुन रहा है, भगवान को दर्शन किया है, भगवान को नाम जप किया, ये जो भी संपत्ति ये मिलता है ये कभी भी नाश नहीं होता है। सो अंतवंतु ये जो शरीर की वजह से जो भी हम ये भौतिक संसार में हम कमाएंगे वो कोई ना कोई परिस्थिति में वो नाश होना ही है, इसको कोई रास्ता दूसरा रास्ता नहीं है। सो इसलिए इधर ये बताया है अर्जुन की शोक विशोक और द्वंद्व, उनके अंदर जो द्वंद्व भाव था, ये सुख है, ये दुख है, ये लाभ है, ये नष्ट है, ये मान है, अवमान है, जो भी उनकी अंदर ये द्वंद्व की भाव था, उन्होंने जब कृष्ण को स्मरण किया, कृष्ण उनको क्या उपदेश किया, उनको याद और स्मरण करने के मात्र से ही उनकी आध्यात्मिक संपत्ति बढ़ गई। वो आध्यात्मिक संपत्ति जब उनके अंदर बढ़ गई, उनकी अंदर द्वंद्व भाव निकल गई। सो इसमें और भी बताया है, उन्होंने द्वंद्व भाव से मुक्त होके, त्रिगुण से परे होके वो दिव्य स्थिति पर स्थित होगा है। सो ये फलश्रुति काली अर्जुन के लिए नहीं है, हम ऐसा नहीं समझना ये काली अर्जुन के लिए, अभी भी ये हो सकता है। हम जो भी हमारे भौतिक हमारा जीवन में श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सो हम ऐसा नहीं सोचना ये काली अर्जुन के लिए होता है, हमको नहीं होता है, ऐसा नहीं है। अभी भी हम अर्जुन की फुटस्टेप्स में फॉलो करेंगे। अर्जुन क्या किया, ये 3 श्लोक के पहले उन्होंने भगवत गीता को याद किया है, भगवत गीता को स्मरण किया है। सो अभी भी हम क्या कर सकता है, अभी भी हम भगवत गीता लेके हर दिन हम पढ़ेंगे। तद सुपठन विचारण परो। सो हम भगवत गीता सुपठन, फिर उसको विचार करना है, पढ़ना है, फिर बाद में उनको विचार तो कॉन्टम्पलेशन करना है। सुपठन श्रवण सुपठन विचारण परो, हम सुनना चाहिए, फिर बाद में हम उसको पढ़ना चाहिए, इसके बाद में उसको स्मरण करना है। कॉन्टम्पलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे है तो आप गाय को देखेंगे, गाय के अंदर पेट में 4 भाग है। वो पहला क्या करता है, जो भी आप देंगे उन्होंने क्या करता है, पहला वो खा लेता है, फिर क्या करता है, बैठ के वो क्या करता है, उसको वापस लेके आके फिर और उसको व्हाट यू से चमकता है, चपाता। So means it keeps on biting. You see some cow and all, because it has 4 parts. First part it takes immediately. Second, third and fourth part, what it does is it keeps on bringing back that food and again chewing it. So इसी प्रकार हम भी क्या करना है, हम भी भगवत गीता को स्मरण करना है। So contemplation is very important. इधर यही बताया है। सो हम भगवान को इसलिए रूप गोस्वामी ने भी बताया है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा।
कृष्ण को याद करना है तो कृष्ण को नाम को याद कर सकता है, और कुछ श्लोका लेके वो श्लोका के अर्थ के ऊपर आप विचार कर सकता है। नहीं तो हम क्या सुन रहे हैं उसके बारे में हम विचार कर सकता है। ऐसे हम क्या करना है, हमारी असली संपत्ति है ये, हम जब भगवान को सूचन को इंस्ट्रक्शंस को हम स्मरण करेंगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो भगवान की सूचना को इंस्ट्रक्शंस को याद करना, अर्जुन भी उसमें आनंद ले रहा है, उनकी शोक निकल गई, वो द्वंद्व से मुक्त हो गया है, वो 3 गुण से वो परे हो गया है। सो अभी हमारा इधर प्रभुपाद जी इधर बता रहा है, हमारा भौतिक संसार में हर व्यक्ति का समस्या यही है, हम सभी लोग शोक में हैं, शोक में डूब गया है और द्वंद्व में है और त्रिगुण का वश में है। सो अभी इसी परिस्थिति में हम क्या करना है, हम सभी लोग वी आर ऑल इन ग्रेट एंग्जाइटी। हाँ, हम सभी लोग परेशान में हैं, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। सो आप कुछ करने का जरूरत नहीं है, खाली अर्जुन क्या किया वो ही करने तो बस। सो ये भगवत गीता को हम क्या करना है, हम पढ़ना है। सो भगवत गीता में इसलिए भगवान भी बता रहा है, मच्चित्ता मद्गता प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये चतुश्लोकी में ये एक श्लोक है, चतुश्लोकी में बहुत इंपॉर्टेंट। भगवत गीता में पूरा भगवत गीता है, उसमें चतुश्लोकी कहेंगे। हाँ, हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम भूत भाव समन्वितः। सो मच्चित्त मद्गता प्राणा बोधयंत परस्परम, ये 4 श्लोक आता है। इसमें भगवान कह रहा है मेरा भक्तों का काम क्या है, मेरा भक्त लोग क्या करते रहेगा। मच्चित्त मद्गता प्राणा बोधयंत परस्परम। सो परस्पर एक दूसरे भक्तों के साथ क्या करते रहेगा, मच्चित्त मद्गता प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम। किसके बारे में भक्तों चर्चा करता है, माम नित्यम, ये तो कृष्ण की बारे में, भगवत गीता की बारे में, भागवत की बारे में। सो लोग क्या करेगा, चर्चा करेगा। उसी की वजह से उनके अंदर जो भी ताप है वो उपशमन हो जाता है। तुष्यन्ति च रमन्ति च, आवर हार्ट विल बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। हाँ, जस्ट लाइक एक उदाहरण है। सो आपके लिए, आप कहाँ भी जंगल में आप फंस गए, आपको कैसे जाना, आपका रास्ता नहीं है। हाँ, सो देयर वाज अ मैन इन आई थिंक इन इंडोर, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्लेस। एक व्यक्ति जेल में था। सो जेल में क्या हो गया, उनकी बहुत साल से उनको 20 साल 30 साल ऐसा लाइफ टाइम पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट किसी लोग का देता है ना। सो ऐसा एक व्यक्ति को जेल में भेज दिया उन्होंने, जो क्राइम किया इसी की वजह से। परंतु उनको एक बुक मिला है। क्या बुक है तो एक आर्टिकल उन्होंने पढ़ाई किया, कैसे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति जेल से वो गुफा बन के, what you call that, cave, he made the tunnel and how he escaped from the jail. So one person in the jail, he read an article about a prisoner of how he escaped the jail by making a tunnel in the jail. So this fellow was contemplating, always reading that article and studying, वो कैसे टनल बनाया, कैसे गया, इधर से कितना दूर को वो टनल बनाया, ये पूरा इंफॉर्मेशन उसमें था। So all the time he was reading and contemplating, and the person in this jail, what he did, he followed in the same footsteps and he made a tunnel and he escaped from the jail. सो हम भी ऐसे ही करना है। सो अभी अर्जुन का परिस्थिति भी अभी शोक में तप्त है, भगवान नहीं है, मैं क्या करूं। सो उन्होंने अर्जुन क्या किया, भगवत गीता को लेके पढ़ाई की। सो हम भी वो ही करना है। सो हम दूसरा कुछ इन भक्ति, यू डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील। आप कुछ नया चीज़, काफ़ी समय क्या हो जाएगा ना, भक्ति में हम करने के समय वो ये करने के लिए दूसरा कुछ करना है क्या, मैं इतना भक्ति कर रहा हूँ फिर भी इतना समस्या आ रहा है, इतना मेरे अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा है, मैं कुछ तो अलग कुछ करना है क्या, ऐसा बोल के हमारे अंदर विचार आएगा। सो हम दूसरा कुछ करने का ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी जो दिया है उसी को हम क्या करना है,
हम करना है। आप किसी को क्रिकेट प्लेयर को देखेंगे ना, जो भी क्रिकेट प्लेयर हो, वॉलीबॉल और कुछ भी गेम में, वो लोग बहुत सीनियर हो गया तो उनके अंदर ताकत कम हो गया, वो लोग पहले जो खेल रहा था उस प्रकार वो लोग खेल नहीं पा रहा है तो वो कोच क्या करेगा, उनको बोलेगा आप बिगिनिंग समय में, आरंभ अवस्था में आप ये क्रीड खेलने के समय, कोचिंग लेने के समय आप क्या क्या टेक्निक्स यूज करता था, उसको क्या करेगा, आप उनको याद करके फिर उनको वही टेक्निक्स को क्या करने का उनकी प्रेरणा देगा, अभ्यास करो, फिर उनको वापस वो शक्ति मिल जाए, वो पहला कैसे वो खेल रहा था उसी प्रकार उनके अंदर ही विल गेट द सेम एनर्जी एंड एंथुजियाज्म टू प्ले द गेम. So all the coaches will do the same. Go back to the beginning. Go back to the beginning. Go back to the beginning. So हम भी हमारा भक्ति में आरंभ अवस्था में जाना है. हम इस्कॉन में आने का पहला साल कैसे था? इस्कॉन है तो वैकुंठ है, इस्कॉन की भक्त है तो वैकुंठ वासी है, प्रसाद है तो उसकी ये भौतिक स्तर की परे है. हाँ, प्रसाद है तो प्रसाद ही सर्वदा, प्रसाद मिल गया तो इतना आनंद मिल रहा था. भक्तों से मिलने तो एक एक भक्त को देके प्रणाम करके प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु, और भगवान को देखने तो साक्षात भगवान है, और भगवान के सामने नाचा है तो भक्तों का बीच में संकीर्तन किया है तो गोलोक वृंदावन में ही हैं, हम इधर नहीं हैं, वो भाव रहेगा. परंतु धीरे धीरे चलते रहेगा ना, आगे आगे चलते रहेंगे. हाँ, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट. क्या हो जाएगा? हाँ, यही भक्त लोग है, यही उपन्यास, यही प्रवचन बोलते रहेगा. हाँ, वो लोग हाँ हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, ये पूरा सीधा क्या हो जाता है, धीरे 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 हमको आलसी आ जाता है. ये सेम एक्टिविटीज़ को हम इसको वेटेज जो है, इसको वैल्यू जो है हम कम कर देते. इसको मंगल आरती है ना, ठीक है, मंगल आरती, ये सब कुछ क्या होता है, धीरे धीरे हम पहले स्पिरिचुअल मन दिल लगा के हम करता था, अभी क्या हो जाएगा, धीरे 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 वो खाली रिचुअल हो जाएगा. रिचुअल है तो क्या ना, टाइम क्लॉक रहेगा, वो टाइम क्लॉक से 4:30 है तो मैं मंगल आरती आना, जस्ट खड़ा रहना बस. 5:30 बजे हो गया, माला लेना, उठना, जप करना, माला हरे कृष्णा कृष्ण, ओ जतम जप करता. अब भगवत गीता बैठना, भागवत, सब ऐसी एक रूटीन और एक मैकेनिकल प्रोसेस हो जाएगा. सो इसलिए ये बताया है, दिस डिवोशनल सर्विस डज नॉट डिपेंड ऑन द मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ चैंटिंग एंड हियरिंग. ये भक्ति हम मैकेनिकल रूप से, अंटे मशीन है तो मालूम है ना, आप लगाए तो बस वो बोलते रहेगा. हमारा हरे कृष्ण चिप भी है ना प्रभुपाद जी को, वो लगाएंगे पूरा दिन हरे कृष्ण मंत्र चलते रहेगा. सो ऐसा हम मैकेनिकल नहीं होना चाहिए. सो हम जब हमारी भक्ति ऐसा मैकेनिकल हो जाता है, उसमें रस, उसमें आनंद और आस्वादन नहीं रहेगा. फिर हमको क्या लगेगा ना, ये क्या है, इसमें भक्ति में आनंदाम्बुधि वर्धनम बोला है और भक्ति सब शोक को नाश करेगा. कभी कभी ऐसा सोच भी आता है, मैं भक्ति आने के बाद मेरा परेशान बढ़ गई. हाँ, हम पहला ऐसा ही नहीं था. हाँ, सो एक भक्त ने बोल रहा था प्रवचन में, प्रभु जी आप बोला गरुड़ पुराण में ऐसा बता गया है, मर जाने के समय 30,000 बिच्छू काट के आपकी उतना अनुभव मिलेगा, परंतु मैं भक्ति में जो परेशान और दुख अनुभव कर रहा हूँ, ये साधना भक्ति में ये इतना परेशान है, ये 30,000 बिच्छू से भी ज़्यादा परेशान हमको अनुभव हो रहा है प्रभु जी, नरक की तरफ हो रहा है. सो वो हो रहा है तो अच्छा है, आपके अंदर उतना frustration or stress. Prabhupada is saying in one lecture, he is saying Krishna will see that you are frustrated, and you have to get frustrated in such a way. Prabhupada is saying that you should not have a iota of hope that this material world can make me happy. आप जब तक आपके अंदर ये भौतिक संसार मेरे को किसी प्रकार भी मेरे को सुख देने वाला नहीं है, आपके अंदर वो क्या बोलेंगे, unless you get that conviction in your heart, so कृष्ण क्या करते रहेगा, पिटाई देते रहेगा. जब तक आपको
वो कन्विक्शन नहीं आएगा। सो इसलिए आपको परेशान ज़्यादा हो रहा है तो अच्छा है। प्रभुपाद ये उदाहरण भी दिया है, आप घर है, घर को ज़्यादा दिन आप सफाई नहीं किया, बहुत दिन ऐसे पूरा धूली सब कुछ भर गया, सो आप 3 महीना 4 महीना नहीं है तो 1 साल तक आप घर छोड़ दिया, तो ऐसे छोड़ दिया तो पूरा धूली रहता है ना। आप इसको सफाई करेंगे, सफाई करेंगे तो तुरंत आप झाड़ू लेके मारने के समय वो धूली पूरा ऊपर निकलेगी। वो निकालने के समय आपको खांसी बुखार आएगा भी आएगा। हाँ, इसको हम ऐसा नहीं सोचना क्या प्रभु जी वो होएगा, वो भी पार्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन है, वो चलना है, गाड़ी तो चलते रहना। सो वो हमारा झाड़ू लेके मारने के समय, झाड़ू लेके सफाई करने के समय वो एकदम पूरा ऊपर निकलता है, हमारे शरीर को कुछ तो कुछ असुविधा रहेगा भी रहेगा। फिर भी हम क्या करना है, सुखे टाको दुखे नाको सदा हरि बोले टाको। सुख में दुख में किसी परिस्थिति में हरि नाम स्मरण करते रहो। सो इधर हम ये समझना है प्रोसेस यही है, दूसरा प्रोसेस कुछ नहीं। हम दूसरा किसके लिए जाने का भी जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जो दिया है वो हम 100% फॉलो करेंगे तो बस मेरा जीवन सफल हो जाएगा। सो हमारी सोच, हमारा विश्वास उतना रहना है, वो कन्विक्शन रहना है। सो वो छोड़ के हम कुछ भी करें, हाँ, वो छोड़ के हम कुछ भी करें। रूप गोस्वामी ने एक श्लोक बताया ना, श्रुति स्मृति पुराणादि पांचरात्रिक विधिमहीना ऐकांतिकेर हरिर भक्ति उत्पाता एव कल्पते। सो हम श्रुति स्मृति को छोड़ के, प्रभुपाद जी को, वाणी को छोड़ के हम कुछ तो कुछ अलग करने क्या जाएंगे, हाँ, फिर क्या हो जाएगा, वो केवल उत्पात, हमारा भक्ति में उत्पात मिलेगा, हमको जो फल मिलना है वो फल नहीं मिलेगा। सो इसलिए हम भक्ति में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं करना है। कैसे प्रभुपाद जी भगवत गीता एसिटीज बोले हैं, सो उसी प्रकार प्रभुपाद जी को इंस्ट्रक्शन भी ऐसी फॉलो करना है। एक समय प्रभुपाद जी का एक लीला है, एक प्रेसिडेंट था, मैं किसी टेम्पल मेरे को नहीं मालूम है, परंतु ये मैं सुना है, हिज होलीनेस भक्ति चैतन्य स्वामी महाराज से मैं सुना है। सो प्रभुपाद जी एक टेम्पल प्रेसिडेंट, उनकी इच्छा क्या है, काली palm oil. Is palm oil is used for cooking, Prabhu? So he was very fond of cooking prasadam with bhoga or prasadam with palm oil. And all the devotees in that community were highly frustrated because he is all the time encouraging to cook with palm oil. So all the devotees were eagerly waiting when Prabhupada will come. प्रभुपाद कब आएगा, हम उनको कुछ तो कुछ बोलना है। सो प्रभुपाद जी वो मंदिर आया है, वो कितना भी भक्त लोग उधर कोशिश किया उनको प्रेसिडेंट को समझाने के लिए, वो छोड़ने का नहीं है, क्यों तो थोड़ा एक्सपेंस कम है। सो आपको कितना भी बनाने तो भी आपको कुछ समस्या नहीं रहेगा। सो फिर कितना भी भक्त लोग उधर पूरा निराश था, क्या है ये, कैसे भी ये बार प्रभुपाद आने तो प्रभुपाद को जरूर बोलना है, ऐसी पाम ऑयल नहीं यूज करना करके। सो ये प्रेसिडेंट क्या किया, प्रभुपाद वो मंदिर को आया, प्रेसिडेंट क्या किया, सो सीधा प्रभुपाद आए थे ना, प्रभुपाद से पूछा है, प्रभुपाद इज इट ओके नो टू कुक विथ पाम ऑयल, इट इज ओके नो, इट इज फाइन। प्रभुपाद सेड मे बी नॉट गुड। Because he thought if I convince Prabhupada, if Prabhupada says palm oil, cooking with palm oil is good, then all the devotees will have to accept it. So he thought, okay, I will go and convince Prabhupada. So he went to Prabhupada. Prabhupada, is okay not to cook with palm oil. Prabhupada said, maybe it is not good, maybe not good. So again he went, he wanted to have a confirmed, because he had one opinion in the heart. That means to make Prabhupada convinced that palm oil cooking is good. So again he went to Prabhupada. Prabhupada, what do you think, cooking with palm oil is fine, no? Is nothing wrong, no? Is fine, but still I feel it is not good. So then Prabhupada could understand that all the devotees there, he got the news that, all the devotees were fried because this president is, he
he is sticking to cooking only with palm oil. So like that, then the third time again he came. So this time Prabhupada, he had a trick. So Prabhupada, what do you think, cooking with palm oil is okay, no, it's fine, no, what's wrong? So Prabhupada said, it's fine, okay. Like that Prabhupada gave answer, and that president was leaving the room. Prabhupada said, stop, he said, so in Kolkata, I read a newspaper that one person had eaten pakodas made with palm oil and he died. So, okay, now you can go. So he got the information what he has to tell. Sometimes like that, like that Prabhupada standard, what Prabhupada wanted and what devotees wanted, what is the need of the devotees. He was not worried about all that. He was worried only with his opinion that I have to cook with palm oil. So Prabhupada had to give this example and he had to tell him in a different way to make him understand. So like that, here we can see we should not get into that kind of concoctions or speculations, our own opinions. So when you mix that, what will happen? The potency or the mercy which is flowing, that we will lose that mercy or the potency. Just like now, the Chaitanya Mahaprabhu's movement is like a very fast flowing river. It has a very good current, just like in Ganges. So just like sometimes we see, एक साइकिल वाला क्या करते हैं, वो बाइक को पकड़ लेता है. सो बाइक कितना स्पीड चलते रहेगा, वो साइकिल भी उतना स्पीड चल सकता है. कभी कभी विलेज में देखते हैं वो लारी जाने तो वो लारी को पकड़ लेगा. सो ऐसा वो ऐसी क्या है, हमारा स्ट्रेंथ कहाँ है, तो हम कितना टाइट से वो पकड़ेंगे. हमारा स्ट्रेंथ ऐसा नहीं. हमारा स्ट्रेंथ क्या है, तो हम साइकिल में इधर से दिल्ली तक जाना कब जाएंगे साइकिल में, परंतु बहुत बस जा रहा है, लॉरी जा रहा है, उसको हम क्या करना है, टाइट से पकड़ना है. सो हमारा स्ट्रेंथ बल क्या है, तो हमारा इंस्ट्रक्शंस जो दिया हुआ है, वो इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ साउंड, दैट इज वेरी पावरफुल. इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ साउंड. कैन यू प्लीज टेक 10th canto? Sorry, I deleted it. So in before the Rasa Leela chapter, you can see the verse. Maybe you can lock it and you can see. There is a verse when gopis came to Krishna. Krishna is saying, "Why you have come? There is no need for you to come." Rasa Panchadhyay, Rasa dance is there, no? That chapter. In that, Krishna is saying to gopis, "You don't have to come. You all go back. What you do? Shravanat, Darshanat, Dhyanat. You do that. Even if you come in front of Krishna, Krishna is telling to gopis that, I think in Rasa, it is coming in Rasa dance chapter, 10th canto. There is a very important shloka which Krishna says to gopis. So we consider gopis as the topmost devotees of Krishna. And when they came to Krishna for Rasa dance, that time Krishna is giving a very powerful instructions for them. It is one shloka. No, before this chapter. How to go to the back? Prabhu? Which is Rasa dance chapter? Hmm. 10:29. Yeah, 10:29:27, Prabhu.
Can you take that shloka? Yeah. What is that shloka? Can you please give mic to Radhakan Prabhu? Huh? Yeah. Give mic to Radhakan. श्रवणाद् दर्शनाद् ध्यानान् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्. Transcendental love for me arises by the devotional process of hearing about me, seeing my deity form, meditating on me, and faithfully chanting my glories. The same result is not achieved by mere physical proximity. So please go back to your homes. So it's a very powerful instruction Krishna is telling to the gopis. This is not to gopis. I think this is to maybe gopis or... Yeah, Gopis, they came for rasa dance. So that is the instance here. So here Krishna is saying, you just being with me is also not use. You are thinking you have to be with me. But Krishna's personal presence, gopis are in personal presence with Krishna, physical presence. But here Krishna is saying, not some love. Transcendental love for me arises by the devotional process of hearing about me, seeing my deity form and meditating on me and faithfully chanting my glories. The same result is not achieved by mere proximity. So this is the point here. We think sometimes Arjuna also, just being with Krishna, we think everything is okay, everything all I have achieved. Sometimes being with spiritual master, हम आध्यात्मिक गुरु के साथ रहेंगे तो हमारा जीवन सफल हो गई. So once Prabhupada, one of the disciple of Prabhupada asked Prabhupada, is it that only one senior disciples who are very closely connected to you and they are serving you in a very intimate way, or only you are very special devotees to you? Aren't we? We are not so close, or we are not in so proximity, or we are not all the time with you. But there are some senior disciples, sannyasis, and some secretaries. They are having close proximity with you. So is it that only they are only very close to you? Are we not? Then Prabhupada in Mayapur this was asked. Then Prabhupada gave the example of a mosquito. Prabhupada said, even mosquito is very close to me. But the same mosquito, it is very close to Prabhupada's body, but what it is doing? It is sucking the blood out of Prabhupada's body. Prabhupada said, being close doesn't mean that, he is doing very favorable thing to Prabhupada. Being close with Prabhupada or being close with Krishna means being always associated with the sound vibrations left by them. So now here the instructions what Krishna has given. Krishna is saying, gopis, you just being with me is also, he is saying. So he is saying the same result is not achieved by mere physical proximity. So even if you be with Krishna also, just like, who is that? Kala Krishnadas, who was with Chaitanya Mahaprabhu. Kala Krishnadas, Chota Haridas. They were all very closely connected to Chaitanya Mahaprabhu. Doesn't mean that doesn't always guarantee that, you'll become a pure devotee. So there are some instances being very close also, sometimes we offend and there is an opportunity that we may go back in our devotional service. So, but this is very important. Krishna is saying, see what Prabhupada gave is, whatever Krishna wanted, he gave us in the form of this ISKCON.
See, you see here, hearing about me is there in ISKCON. We are all hearing about Krishna, we are chanting about Krishna, we are hearing Krishna Katha, holy name. All the time we are connected with hearing. From morning to night, Mangalarati, everything is hearing only. Seeing my deity form, we are seeing the beautiful deity form of Shri Shri Radha Madhav, Shri Shri Jagannath Baldev Subhadra Maya and Shri Shri Gauranitai. We are seeing the deity form and we are meditating also. So as we keep on, Prabhupada says, as we keep on seeing the deity, the impression of those deities will come in our mind. So now how many of you have experience? Like we keep on seeing a particular deity for some time. At any time, any distress comes or any problem comes, you can immediately think of the deity form, the lotus feet, what you are deeply meditating on, that you can immediately remember. You can close the eyes and you can remember. Prabhupada is saying, by seeing the deity form, you get that impression in the mind. So when you close your mind, wherever you are, you can see Krishna. So like that, so Prabhupada is giving, seeing my deity form and meditating on me and faithfully chanting my glories. So chanting faithfully, that is very important. We need to do with faith that this process is sufficient to make me 100% perfect to develop love for God. So we need to have that faith. So we need to have faith just like Bhima. In this same chapter Durvas Muni's pastimes come, no? That time Krishna told Draupadi, you see if there is any one grain left over in the Akshay Patra. He took that one grain and he told Bhima, you go and invite all the Durvasa Muni and all the 10,000 disciples, you go. Actually इधर कुछ भी नहीं है इधर. काली कृष्ण एक ग्रेन को लेके वो खा लिया. कृष्ण तुरंत भीमा को बोला है अब जाके बुला के लेके आओ. भीमा सोच सकता है ना क्या है अभी कुछ नहीं है, वो जाके he is asking to go and call, but Bhima didn't have doubt. हम वही स्थान में हम रहेंगे तो क्या करेगा? वही स्थान में कृष्ण उधर कुछ भी नहीं है, अक्षय पात्र है, कृष्ण एक दान को he has eaten one grain of rice. He immediately told Bhima, you go and bring them. Bhima without any doubt he went. जाके he was calling them. But if we be in that same place, हम क्या सोचेंगे क्या होएगा? अभी कृष्ण भी कुछ भी नहीं, हमको फेथ उतना इजी नहीं आता है. देखो अभी हम इधर हमारी स्थिति क्या है बद्धावस्था में. अभी हम सब लोग इधर बैठे हैं ना, आप लोग इतना अच्छा सुंदर से भागवत को आप श्रवण कर रहे. अभी स्वयं भगवान इधर प्रकट होके आप लोग इतना सुंदर से श्रवण किया. आप में अभी वैकुंठ लोक को आपको लेके जाना चाहता हूँ. ऐसे भगवान अभी इधर प्रकट होके बोलने तो भी हम भगवान आया है और ना ये तो कोई दूसरे कोई आया करके हमको डाउट आता है. भगवान स्वयं इधर आने तो भी हमको विश्वास नहीं करने का परिस्थिति नहीं है. वो ऐसा हम विश्वास किया है तो if we have put faith, okay, Krishna has come, he is Krishna. Still what we will have immediately, if now Krishna appears and if he calls us back home, back to God, what we will say? Maybe not now. थोड़ा टाइम दे. अभी जस्ट हमारे अंदर बहुत कुछ प्लानिंग है. अभी थोड़ा अभी ये होना है, मैं ये पैकेज को रखा है, ये होना है. Even if Krishna calls now, still our problem is we don't have that faith. So just like Tukaram Maharaj also. So Tukaram Maharaj told his wife, so the Lord has gave me a call that today evening Pushpak Viman Vaikuntha se kuch some Vahana will take me. What she thought? All the time he will be talking like this only. He has no other business like that. She took it very lightly. But the fact was, the Garuda Vahana came and took in Dehugaon, Tukaram Maharaj's birthplace. So it's near Pune. It's a practical thing. Our problem is here it is being said, faithfully chanting my glories. We should have faith. Krishna and Krishna's holy name is not different. At least theoretically we know this is Krishna, this is
this the deity form which we are worshipping. This is Sakshat Krishna. Prabhupada says the word. The deity form is Sakshat Krishna. And the Bhagavatam is the Granth Bhagavatam. It is also Grantha Avatar. It's the Lord's form. And anything like that, we are connected with the Lord. We should always feel that we are with the Lord. Once Prabhupada asked in the class, he asked some disciples, so how do you know that Krishna is there? How do you know that Krishna is there? So one disciple said, Prabhupada, because you are telling Krishna is there, I believe that Krishna is there. Prabhupada said, I am an old man. I can speak anything. Huh? Just like one young reporter came to Prabhupada and she asked Prabhupada, she asked Prabhupada, Prabhupada, Krishna is so beautiful. How come this material world is so horrible? So then to that young reporter, Prabhupada gave an example. How come you are so beautiful? Your stool is so horrible. So there was no answer. So sometimes Prabhupada will say to his disciple, I may talk, I am an old man, I can talk anything and I can get on. But you don't do like that. So like that, so Prabhupada said, I am an old man, I can talk anything. How will you believe that Krishna is there? So another disciple said, Prabhupada, no, all the scriptures are saying that Krishna is there. कोई बोल सकता है, वो कोई भी रचना भी कर सकता है, वो कुछ क्रिएटिव करके भी हो सकता है. What is the guarantee? Then another one disciple said, Prabhupada, while chanting Hare Krishna mantra, I feel Krishna. By chanting Hare Krishna mantra, I feel Krishna. Then Prabhupada said, this is the answer. It is not that only हम इतना चर्चा करें, इतना पढ़ाई करें, इतना श्रवण करें, फिर वो खाली just theoretical knowledge नहीं होना चाहिए. In our everyday practice of Krishna consciousness, we should feel Krishna. By chanting Hare Krishna, we should know that here is Krishna. By hearing Śrīmad-Bhāgavatam or studying Śrīmad-Bhāgavatam, we should know that Krishna is in the form of the sound. By seeing the form of the Lord, we should know this is Krishna. While honoring prasadam, we should know this is Krishna's prasadam. So only if you see Prabhupada's honoring prasadam, His Grace Harishori Prabhu says, Prabhupada turns to a wall. Prabhupada doesn't eat like this. Prabhupada turns to a wall, because for Prabhupada, honoring Krishna prasadam is devotional service. It's wo bhi bhakti hai. So Prabhupada, he is very grave and he sits turning towards the wall. One table will be there. So Prabhupada will have a bell. So Prabhupada was very favorite of hot chapatis. He will take hot chapatis. So when Prabhupada rings the bell, then they have to make from the pan hot chapati should come to his plate. And if that is finished, again one more. So Prabhupada was saying, because Prabhupada was feeling this is Krishna's prasadam. Krishna in the form of Krishna's prasadam. He was feeling that. So like that we should feel Krishna in our practice of devotional service. It's not that we are thinking of someone of 1,000 centuries gone by, or Krishna somewhere in Goloka Vrindavan. No, we should feel that Krishna is here, even with me at now, in the form of sound, in the form of deities, in the form of all the varieties of devotional service. Hum jo bhi kare, Krishna is personally present. We should have that conviction. We are not impersonal and we should not feel, and sometimes devotees feeling insecure and kind of loneliness, chanting Hare Krishna. After chanting Hare Krishna, that is kind of a horrible thing. Because Krishna is there, how will you feel that you are alone, you are insecure, there is no one like that? Because Krishna is there in the form of holy name. Only thing what you have to do is, Prabhupada said, Prabhupada about chanting, he gave so many things, but he told only one thing. If you want to feel Krishna, Prabhupada said, just chant and hear. No technique is required. अब जप करो, क्या करो? जो जप कर रहा है उसको श्रवण करो, बस. You can feel Krishna. Anybody can feel Krishna.
So, and that is the essence of devotion. So, in one purport of Prabhupada is saying that one should walk with Krishna. All the time we should walk with Krishna. We are with Krishna. So we should come to that level of understanding Krishna consciousness. Then it will be, then our bhaktim paramaya muda, then our bhakti will be blissfully we can perform. When you don't have that feeling or at least theoretical understanding that Krishna is there, then everything you do, it will be very dry, it will be very pale, no juice, and आपको लगेगा ये क्या है? हाँ? हम बाहर कुछ पानी पूरी खाने तो भी हमको कुछ रस मिल रहा था, इधर भक्ति करके इतना बोल रहा है परंतु कुछ रस नहीं आ रहा है. सो भक्ति में उतना रस है परंतु हमारा दुर्भाग्य है, हम वो रस को पान नहीं कर पा रहे. सो इसलिए हम क्या करना है, इधर अर्जुन क्या किया वही हम करना है. अर्जुन भगवत गीता को लेके पाठ किया है, हम भी भगवत गीता लेना है, भागवत लेना है, पाठ करना है. प्रभुपाद जी को जो मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है उसको फॉलो करना है. हमको जो सेवा दिया गया है वो सेवा करना है. प्रभुपाद गृहस्थ लोग के लिए कभी कभी इस तरफ भी बोलता था, क्या है, आप जाएंगे कहाँ भी आप काम करो, आप मेरा लेक्चर को, हाँ मेरा लेक्चर को, यू प्ले माई लेक्चर एंड यू कीप ऑन डूइंग योर ड्यूटीज, कहाँ भी है आप सुनते रहो बस. So like that we should mold our life in such a way that we should always we are with Krishna. हम कैसे भी कृष्ण के साथ ही रहना है. See, without Krishna there is no life. One thing we need to understand, without Krishna life is dead. So all the outside people, they don't have Krishna, they are living dead people, they don't have life. But we practicing Krishna consciousness, we should just like Arjuna, immediately when he remembered Krishna's instructions, Bhagavad Gita, immediately he felt the life. So always we should be connected to sound. Sound is in the form of sound. Even as per this shloka, being even in personal presence of Krishna is better is being with his sound. So isliye there is one song by Purandara Dasa. He says, "Ni ako, ni hange ako." What for you? Hell with you. I don't want you. I don't want your glories also. But I want ni nama onde idde ade namku saku. I don't want you. I don't want your fame. I don't want. But I want your name. That is enough for me. So Purandara Das, he sings in one kirtana. So he's saying, even Lord, I don't want you. I want your name. Bus. In your name, everything is there. Because when you chant the name, Nama Rupa Guna Leela. When you chant the name, the Rupa will be manifested. When you chant the name, Guna will be manifested. At last, the pastimes will be manifested. So in Nama, everything is there. In Nama is complete. Nama Chintamani Krishna's Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddho Nitya Mukto Abhinatvam Nama Naminaha. So Nama is complete. It is Purna, it is Nitya Mukta, it is above the three modes, everything. So Prabhupada said 99% of our devotional service is dependent on chanting. So but all other activities what we are doing, it is to assist that chanting. So all the other activities, the preaching, deity worship, or the hearing Bhagavatam, studying Bhagavatam, this is all ultimately to help to do better chanting. So the secret is in the chanting. See, His Holiness Bhanu Maharaj gives a very wonderful explanation of Krishna's name. Why Krishna's name is so powerful. He says, see, when Hiranyaksha and Hiranyakashipu, when Vijay and Vijay came, they were Hiranyaksha and Hiranyakashipu. So Hiranyaksha was killed by Varahadev. Hiranyakashipu was killed by Nrsimhadev. Again they appeared. Okay. They appeared as Ravana and Kumbhakarna. Again they were killed by Lord Rama. So His Holiness Bhanu Maharaj, he gives why Krishna's name is so powerful. But when Shishupal and Dantavakra came,
See, these people came from Hiranyaksha, Hiranyakashipu to Ravana, Kumbhakarna, but when they came to Shishupal and Dantavakra, when Krishna killed them, that's it. They never came back. So he says, he compares these items, and he says, Krishna's name is so powerful. When you chant Krishna's name, that's it. Everything is gone. Prabhupada is saying Krishna means greatest. Na means greatest. Krish means happiness, pleasure. In the book, what is that book? Not Reservoir of Pleasure. What is that book? First book I was reading. Yeah, maybe one small book. Prabhupada is saying Krishna means the greatest pleasure. So if you want the greatest pleasure, you have to hold on to Krishna. So Krishna's name has these features. So like this, there is so much in holy name, so much in Bhagavatam, so much in association of devotees, serving the deities, preaching, all the activities. Only thing is we need to develop the taste. Everything is there. सब कुछ है, परंतु क्या नहीं है? Taste नहीं है. Everything is there. Only the taste is missing. Prabhupada says all the problems in your Krishna consciousness, in your spiritual life, is due to lack of hearing. Lack of hearing means Shravan acha nahi hai. Shravan, you are not hearing properly. When hearing becomes weak, everything becomes weak. As Vishwanath Chakravarti Thakur says, Shravanam, Kirtanam, Mananam and Nididhyasam. It's a curve, it goes like this. So when Shravanam is good, Kirtanam will be good. When Kirtanam, Shravanam and Kirtanam both are good, then the Manana will be good. When the Manana is good, then when the contemplation is good, then Nididhyasam. That means the application of that philosophy will be very good. Then your devotional service will go like that. This devotional service curve. Vishwanath Chakravarti Thakur says, if the Shravanam is weak, if sometimes you do your bhakti as a very weak, बहुत बलहीन करते हैं, अच्छा से नहीं करेगा, क्या हो जाएगा? So the water stagnates there. अब बहुत थोड़ा दिन भक्ति किया, water है, भक्ति का जल है, परंतु आप उसको आगे नहीं बढ़ रहे तो when water gets stagnant, what will happen? It becomes fungus and the smell starts coming. So like that, Vishwanath Chakravarti Thakur says, when your Shravanam is very weak, what happens is, again all that old vasanas will come back. Stagnant water gives rise to many fungus and many bacteria and so many other things. And it leads to vasana, smell also. So like that, when Shravanam is very poor, everything becomes, again all the vasanas will come away, and again we'll think, hey, we'll be in a big dilemma, what to do, whether to practice or give up. When I was not practicing, I didn't have this much, and after practicing, I am having this much pressure. So our bhakti, we should not make our bhakti as a pressure, we should make it as a pleasure. It depends on how we practice. Bhakti is pleasure only. So sukham kartum avyam. Bhakti has no problem. But only thing, our way of approach to bhakti is a problem. हम उसको ठीक से नहीं कर रहे, इसलिए हमको प्रेशर लगता है. आप ठीक से करेगा तो वो प्लेजर लगेगा. So हम ठीक से नहीं कर रहे. So I see Prabhupada gives the example of in teachings of Lord Kapila, Prabhupada gives the example of a disciple who was told to bring a glass of water. So when a disciple was told to bring a glass of water, he thought, maybe my guru will be happy if I bring a glass of milk. So he thought he brought a glass of milk. So Prabhupada said that is not serving the spiritual master. When spiritual master has told you to bring a glass of water, you bring the glass of water. You don't speculate and think, if I bring milk to my spiritual master will be more happy. You speculate something and bring. Prabhupada says that is not the way of serving the spiritual master. So the way is, you try to, there are 4 kinds of disciples. 4 kinds of disciple is, the first standard of disciple as explained in 11th canto. The first class disciple is, without spiritual master telling only, he will understand. Sri Chaitanya Mano Bhishtam.
Rupa Goswami could understand what is going on in Chaitanya Mahaprabhu's mind. There are 2 shlokas, no, which Chaitanya Mahaprabhu chanted in the Rath Yatra, which Rupa Goswami could understand, and he wrote it in a palm leaf and he struck it on the roof. Then Chaitanya Mahaprabhu read it and he was very happy because he understood the mind of Chaitanya Mahaprabhu. So first disciple is that. Second disciple is when he is told what he is told, he will do that. That is second disciple, second class disciple. Third class disciple ना, आप उनको बोलना है, फिर उनके पीछे लग जाना है. कभी कभी आप किसी गेस्ट हाउस में जाएंगे ना या दूसरे कहाँ यात्रा जाएंगे, वो गेस्ट हाउस में जाके आप फैन का स्विच डालेंगे, फैन चलते रहेगा. आपको अंगुली को निकालने तो इफ यू टेक ऑफ द हैंड दैट फैन बंद है, फिर आप उसको प्रेस करना. हमको पुराना स्विच को कुछ आइडिया लगता है ना, उसको प्रेस करके रहने तो वो फैन चलते रहेगा, लाइट चलते रहेगा. अंगुली निकाल दिया तो वो बंद हो जाए. ऐसा काफ़ी शिष्य लेता, उसको क्या करना है, पुश करते रहना, आओ करो, उसको पीछे लग जाना है. फिर पीछे लग जाने तो आएगा, नहीं है तो नहीं है. और दूसरा फोर्थ कैटेगरी शिष्य क्या है ना, सो एक गेस्ट हाउस में आप जाएंगे तो फैन लगाएंगे तो फैन चलते रहेगा, परंतु आप उधर जाके कितना भी रेगुलेटर को कंट्रोल करो, वो रेगुलेटर कंट्रोल नहीं हो रहा, वो अपने आप दुनिया में, उसको कुछ कंट्रोल है ही नहीं. क्यों, तो वो रेगुलेटर उसको कुछ. सो ऐसा फोर्थ क्लास डिसाइबल कौन है, तो वो आप क्या बोलना, मैं क्या करेंगे, आप कुछ बोलते रहो, मैं जो करना करते रहेंगे. सो हम विच टाइप ऑफ डिसाइपल आई वांट टू बिकम, सो हम ही डिसाइड करना है. सो इसलिए हम अच्छी डिसाइपल, कम से कम व्हाट इज बीइंग टोल्ड यू डू. Don't speculate. We are not on the stage of entering Guru's heart. What is he thinking? At least he is speaking through his lectures what he wants. हमको वो जानता है, वो जान के हम उसको कोशिश करना. हम ऐसा पुशिंग भी नहीं होना. पुशिंग आरंभ काल में होता है, पुशिंग करते रहेगा. Prabhupada said this is a pushing moment. We have to push. Sometimes हम गाड़ी को देखेंगे ना, गाड़ी सडनली स्ट्रक हो जाता है, उसको क्या करना है, पीछे से पुश करना पड़ेगा. परंतु पुश कब है, पुश करते रास्ता पूरा जाएंगे क्या, पुश खाली थोड़ा 100 मीटर्स 200, हाँ ना, फिर क्या होना है, स्टार्ट होना है. ऐसा नहीं जिंदे में पूरा पुश करते रहेंगे, वो भी नहीं चलेगा. Our pushing movement, Prabhupada said, no doubt of it. That doesn't mean that we should, our whole life someone should be pushing. वो भी ठीक नहीं. So or we should not become other disciple. आप क्या बोलना, मैं क्यों करना, उस तरफ अपने आप दुनिया में. ये अपने आप दुनिया में बहुत डेंजर है. बिकॉज आउटसाइड वर्ल्ड मीन्स वही है, वो लोग किसी को मानता नहीं, किसी को सोचता नहीं, वो अपने आप दुनिया में. हम इधर आने के बाद उस तरफ करेंगे तो हमारा भक्ति एकदम जो इधर मिलना है उसके उल्टा मिल जाएगा. वॉट वी आर सपोज टू गेट दैट विल नॉट गेट, विल गेट समथिंग एल्स. सो इसलिए हम करना है. सो हम कोशिश करना है. वी आर ऑल इन द वे, वी आर ऑल इन द प्रोसेस. हम प्रार्थना करेंगे. सो इसलिए बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, सो ये श्रवणम कीर्तनम स्मरणम निदिध्यासम, ये अच्छा से चलना है तो इसको क्या करना है, प्रार्थना करना. बलदेव विद्याभूषण एड्स दिस पॉइंट. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गेव द कर्व ऑफ डिवोशनल सर्विस, ग्राफ कर्व. ये चलते रहेंगे ऐसे, अब बढ़ते रहेगा. परंतु ये अच्छा से चलना है तो कहाँ से चलेगा, शक्ति कहाँ से आएगा. शक्ति हमारे अंदर नहीं है, शक्ति वैष्णव के संग में है और भगवान का कृपा है. इसलिए हम कृपा को प्रार्थना करते रहना. सो इसलिए योग्यता विचारे किच नहीं पाए तुम्हारा करुणा सार. हम प्रार्थना करते रहना है, प्रार्थना करते रहेंगे, शक्ति मिलते रहेगा. हम इधर अभ्यास करने का ताकत मिल जाएगा, फिर अभ्यास करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, फिर प्रार्थना करना है, फिर शक्ति लेना है, फिर करना है, फिर आगे बढ़ते रहना है. ये हमारा प्रोसेस. इधर से लेना, इधर से जाना. इधर कुछ नहीं, हमारा योग्य कुछ नहीं है. शक्ति इधर से आता है, उधर से, इधर पावर हाउस है, उधर से आएगा. हाँ ना, उधर से लाइन काट गया तो आपको कुछ पावर नहीं रहेगा. बल्ब रहेगा, सब रहेगा, परंतु पावर कट हो गया तो
कुछ नहीं रहेगा। सो हमारा भक्ति क्या है, तो डिसेंडिंग मेर्सी है। हम ऊपर से नीचे याचन करते रहना, कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो, मैं बहुत नीच हूँ, पतित हूँ। हाँ हाँ, ये प्रार्थना किया ना नरोत्तम दास ठाकुर। हाँ, क्या है, पतिता पावाना हेतु तवय अवतार, मोसामा पतिता प्रभु ना पाई भी। आप सृष्टि में पूरा दुनिया में देखेंगे, मेरे से भी कतरे, मेरे से भी बदमाश, मेरे से नीच, मेरे से पतित, मेरे से कोई नहीं है। आप अच्छा हो, अच्छा गुण होने तो भी फिर भी आप क्या सोचना है, मेरे अंदर कुछ नहीं। जब आप ये अंदर मेरे अंदर कुछ योग्यता है सोचेंगे, आपको कृपा नहीं मिलेगी। हमारे पास कुछ नहीं है, खाली कृपा है। सो इट्स लाइक जस्ट लाइक Prabhupada said, take the Ganges water, again put it in Ganges water. So we get the mercy from the parampara, we practice and again give it to parampara. हमको कुछ नहीं। हरे कृष्णा। सो इसलिए लास्ट पॉइंट बताएंगे, फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी गंगा में नहाने तो आपको जरूर भगवत धाम जा सकता है, मुक्ति मिल सकता है, हर प्रकार का पाप नाश हो सकता है, परंतु मच्छी वो जन्म से मर जाने के समय तक वो कहाँ है, हाँ उसके अंदर है वो। परंतु मच्छी भगवत धाम जाएगा अब करके गारंटी है क्या? मच्छी भगवत धाम जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों? तो उनकी ज्ञान नहीं है, विश्वास नहीं। सो ऐसा हमारा भक्ति, हम भक्ति में ही रहेगा, भक्ति में पूरा सागर, वो वी आर इन दैट रिवर, परंतु हम मच्छी नहीं होना चाहिए। मच्छी उधर ही है, परंतु उनकी ज्ञान नहीं है, और मैं इसमें पानी में मैं नहाने तो मैं भगवत धाम जाएगा बोल के विश्वास भी नहीं है। ये दो नहीं है, इसलिए वो उधर ही होने तो भी उसको कुछ लाभ, थोड़ा लाभ मिल सकता है, परंतु पूर्ण रूप से जो मिलना है कृष्ण चरणामृत लेने तो, हाँ क्या कहेंगे कि चरणामृत लेने के समय एक श्लोक बताएगा ना, हाँ सर्व मृत्यु हरणम सर्व पाप नाशनम, हाँ विष्णु पादोदकम पावनम शुभम। सो वो जो मिलना है वो नहीं मिलेगा। सो इसलिए हम मच्छी के रूप में अंदर रहने तो भी गारंटी नहीं है, वो ज्ञान रहना है, विश्वास रहना है। सो हमारे अंदर उसको वी हैव टू, फेथ कम्स ओनली बाय द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड हियरिंग फ्रॉम साधुस, दैट इज द ओनली वे दैट वी कैन गेट फेथ। हरे कृष्णा। सॉरी फॉर टेकिंग टू मच ऑफ योर टाइम। हम बोलते रहेंगे, कुछ तो कुछ आते रहता है, सो हम कंट्रोल करना भी है। नेक्स्ट टाइम थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। ऑलरेडी 9:30 हो गया प्रभु जी, फिर प्रभु जी भी उधर बाहर है, मैं इतना टाइम तक ले ली। The mind is love, the highest emotion. Mind has many emotions, mental way, superficial way. You are in deep relation with the spiritual master, then this emotional situation, emotional will not too much dominate our life. When that becomes our life becomes more emotionally motivated or centered, when you don't have that person to whom to please or to whom you have love, there is no person there, then we feel all these kind of distractions. When you have that person, the spiritual master, you develop the affection, love, hear from him, you hear his qualities and you follow his instruction, you feel the reciprocation, then everything, you don't have so much of emotional dependence or emotional situation. You know that Krishna is within you. Krishna is not anywhere. Krishna is within your heart. He can reveal you any instruction. Prabhupada says in one class, he says, even if you are not having any association of devotees to guide you, still Paramatma will reveal. Yayadama prapadyante tams tadeva bhajam. Mama dadami buddhiyogam. I will give the intelligence. Krishna will give. So this emotional platform, it is only when there is lack of, when we don't have a genuine relationship among devotees. And to get that, we need to pray to Krishna. If you really need, generally for brahmacharis it is suggested to for an emotional need,
it is been said you can go and love mother cows. You go and massage mother cow. You can, till you see, devotee association is required. His Holiness Radhanath Swami Maharaj says in one lecture, to get a really dadadi pratigruhnati guhyamakyati, a peer level to whom you can share, it will take some minimum 10 years. You have to really pray to establish the relationship. So at present we don't, that is also that day His Grace Gadadhar Krishna Prabhu touched that point. To get a devotee is to whom where we can share all our emotional thing, it's not so easy. To get that we need to deeply pray. Lord will give. We may have that friend that we need also. Krishna is saying Machitta Madgata Prana Bodhayanta Parasparam. It is with not with a non-devotee. It is with a devotee. So we need to pray. So till and then we can take the help of Prabhupada's books, hearing and doing personal service to because I was in Tirupati, I'll tell my small thing. When you go to mother cow, you massage, you take the cow dung, you feel that all your emotional need, is fully satisfied. You serve mother cow, you feel so nice, you massage, and you go there, and as soon as you go, the cow looks at you. You feel a kind of exchange with mother cow. All our emotional need, this was told by His Holiness Radhanath Swami Maharaj in his lecture. So all the emotional needs of mother cow can be satisfied by serving mother. Brahmacharis can be by serving mother cow. So till we get a proper relationship and a deep connection with spiritual master. So it's a process, it's an ongoing process. That's what I feel. I don't know if someone has better answer, they can say also. Yeah. By reading Krishna book. Yeah. Practical ways, like in a city like Hyderabad, we don't have cows much actually. So by serving devotees. Yeah. I mean, when we are serving devotees, Krishna is satisfied. When Krishna is satisfied, automatically we become happy also. So I think this is the secret actually. By pleasing devotees of the Lord, Krishna will be happy, Krishna will be satisfied, and automatically we will be also happy and satisfied in devotional service. We will properly grow like that. I have one question also. Yeah. Because faith it's very important in our life. This is in spiritual life. This is like a seed of our devotion. But what is the importance of following the four regulative principles, for example? Because the four regulative principles are like futile soil, futile land, isn't it? Yeah. So if we put this seed in that soil only, the bhakti will. Then it will grow. But then what is the importance of following the four regulative principles in this connection? I heard in one lecture of Prabhupada said, maybe one should not focus too much on the regulations. You try to focus on the chanting part of Krishna's holy name and hearing. This is so potent that will automatically help a devotee to come to the standard of following the regulative principles. So this is very important. Of course, we cannot neglect it. But this chanting and the devotional service is so potent that Prabhupada is saying any latecomer or any degraded person also can be elevated to the highest platform just if they take up the process of chanting and hearing. So only Prabhupada in one lecture he says, so only we have established these temples so that people can come and hear. So by hearing the Krishna Katha and by chanting Hare Krishna mantra in the association of devotees slowly, this following the rules and regulations, that becomes the byproduct of devotional service. So because the devotional service is so potent, this becomes a byproduct.
But the main essence of chanting Hare Krishna mantra is we develop love for Krishna by hearing Śrīmad-Bhāgavatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana. Hridayantasto hi abhadrani. First is it has been said Śrīmad-Bhāgavatam Swakata Krishna. First importance is given to Shravana. Even a person is not on the platform of following 4 regulative principles, still he can be elevated. There is hope if he simply gives oral reception. If he hears in the association of devotees, if he hears Krishna Katha and if he chants Krishna's holy name, this slowly, he doesn't have to even feel that, okay, I have to follow all this. This will become part of his life. That's so in Prabhupada's disciples, we saw that they were all from different backgrounds. But when they came in touch with Prabhupada, they started chanting, associating with devotees. That became a byproduct. They automatically gave up all the things and everything. But by getting higher taste. Yeah, by getting higher taste, yeah. So that's what Vishya Vinivartante Niraharasya Dehina Rasavarjam Rasopyasya Param Drishtva Nivartate. Only by higher taste we can give up. These things becomes, to my knowledge, what Prabhupada said is, in one lecture I heard, he said, you focus on, you don't impose regulations to the people, you encourage them to practice this. By developing higher taste, automatically they will give up this. So that's what I heard. This is good point. Another point is the importance of Shravanam and Kirtanam. Reading, chanting, reading. Actually, once Kadamba Swami said that why our spiritual life becomes stale and dry. Because, and he explained, it is because we are neglecting reading Srila Prabhupada's books. Because, for example, when we are taking initiation from spiritual master, then we are promising him that we will chant minimum 16 rounds every day. But we are not promising him that we will read at least 1 hour of Śrīmad-Bhāgavatam or Bhagavad Gita every day. Therefore, we are not giving in our life so much urgency for reading Prabhupada's books because, 16 rounds is like a duty. We have to finish every day. But reading, we are not promising, we are not giving an obligation like that. So we don't think or we don't take it as the same urgency as chanting Hare Krishna Mahamantra or something like that. But actually, this is same urgency. If we are not reading Srila Prabhupada's books, then our spiritual life become dry, actually, and stale. So it's very important, actually. Shravanam, Kirtanam, and you said, then Smarana will come very easy. Okay, thank you, Prabhu. Yes. So only we should take help of some devotees and come together and read. In the beginning, if we don't have taste, so we should make one devotee who is very much friendly to you or very much in terms, good terms with you. You can say, Prabhuji, let us come together and let us read for 15 minutes. So that will help. We'll start with 15 minutes, 30 minutes. So maybe that by association we can, when we have some reading room or something like that, when devotees come together, definitely we see other devotees are reading. Definitely I have to read. I have one experience. There was one devotee by name Narayan Pandit Prabhu. He came to Tirupati and he was a ferocious reader. He was in our room. We were never reading books, but he was reading 2 hours, 4 hours a day. By seeing, the whole room started reading. So we should take association of those kind of devotees who are into reading. So then the whole room, maybe 5 to 6 members were there. They all started to read for 1 hour, 2 hours, just because they were seeing this example. So like that, we should have some devotees who are always into studying books, scrutinizingly reading, and we feel enthused to read. Otherwise, that is also required. We need to have that kind of association. Yes. Hare Krishna, Prabhu. Thank you for a wonderful class, Prabhu. When we see the qualities, when we hear the qualities of Lord and pure devotees, we get very much inspired. And we don't have those qualities and we try to cultivate them. And but one thing we see that Prabhupada's response to various situations is completely versatile. It's completely different in various situations. Whenever a situation comes to our life, we see previous acharyas or at least our senior devotees, how they dealt, and we try to act in that way.
And but sometimes we see as one progresses in spiritual life, one becomes more compassionate, more loving. Some devotees become like that, and some devotees they will become more grave, like they cannot even tolerate small things also. But some devotees they become more compassionate and loving, and they become more saral, simple and everything. So like when we are trying to cultivate those qualities, like how we'll understand how we should cultivate them, because some are becoming very loving and this thing, and some devotees are becoming grave. Can you please show some light? To my knowledge, what Prabhupada said is there is one shloka in what is that? Yasyasti bhaktir bhagavatya kinchana sarvair gunair. There is a shloka. So when you are doing devotional service to the Lord, these qualities will automatically manifest. Prabhupada gives the example of first one should become a human being. Human being means he should follow the 4 regulative principles. When he follows 4 regulative principles, then he is a human being. Then the next is Prabhupada speaks about Brahmana. Samo damas tapas shocham kshantir arjavam evacha jnana vijnana sahitam brahma karma swabhav. Then that is the platform. So then from that Brahmana platform, that is Sattva Guna. So from Sattva Guna, it's like a spring. It's like a spring. You keep on, you be in that Sattva Guna, that will take you to Vaishnava. Vaishnava is Titiksha Karunika Suhruda Sarvadehina Ajata Shatrava Shanta Sadhubhushana. So this will come. So the first is 4 regulative principles. We have to follow the 4 regulative principles strictly. So to do that, we have to take the association of devotees and chanting and hearing. So we have to develop higher taste. When you develop higher taste, this first we get the strength and we follow 4 regulative principles. Once you are situated in this, then the further devotional service. So only it is been said by Vishwanath Chakravarti Thakur, after that Anartha Nivritti, the Bhajana Kriya is not over. Bhajana Kriya is over. When you have Bhajana Kriya, the Anartha Nivritti takes place. After Anartha Nivritti, then that is Nishiddha Bhajana Kriya. It is more intense devotion. It is not that Bhajana Kriya ends there. So you have to keep on doing these qualities. This will naturally come. This we don't have to imitate or try to do. We can just meditate on these qualities. First is let's meditate on the qualities of Shamo, Damas, Tapas, Shocham, Shanti, Arjavam, Evacha. So these qualities first we have to meditate, and slowly when situations come, we need to, okay, this quality I have to apply in this situation, this quality I have to apply in situation. So we need to, it's all contemplation of the scriptures. And by the strength of bhakti, by contemplation of the scriptures, we can execute those qualities. So, but when your devotion is so intense and when you are totally surrendered, these qualities automatically manifest. That is what is told in Yasyasti Bhaktir Bhagavata Kinchana. One who has surrendered unto the lotus feet of the Lord, the qualities will automatically, all the qualities of the demigods will manifest in him. So we need to focus on, just I was hearing to one lecture, Prabhupada says, you try to, what should be your focus is how to develop love for Krishna. Everything else, developing qualities, following all the rules and everything becomes a byproduct. Our first and foremost concern is how to love Krishna. This is the main thing. So only Rupa Goswami said, always remember Krishna, never forget. Then all the rules and regulations, whatever is there, everything becomes an byproduct to that devotional service. So ours should be Ekeha Kurunanda. That should be there. Then everything follows. Just like you try to catch a bus. You are running to catch a bus. The sweat comes. You don't ask the sweat to come. It comes automatically. So in your endeavor to catch the bus, the sweat comes automatically. Like that, in your endeavor to love for Krishna, all the other things will come automatically. But your only focus should be how to develop love for Krishna. And how to develop that love for Krishna, Mahajano Yenagatasya Panta, Satovrit. We should follow in the footsteps of previous acharyas, not my own concocted ways. What they have said, we follow, automatically it will come. I think I have taken too much time. Thank you. Śrīmad-Bhāgavatam. Jaya.